Namaste to all. What you are going to see in this video is a short procedure of everyday Gayatri Mantra. I have started this Homa with a regular Stuti, Prarthana, Upasana mantras. These are some 8 mantras in the beginning. And after the Stuti, Prarthana, Upasana mantra, we light the camphor and start with the Gayatri Mantra. And normally when we light the camphor, we put small sticks so that the fire will grow. And also after that 3 times Gayatri Mantra, put 3 sticks. And after that do Gayatri Mantra and Swaha for 5 times. And from the 6th time onwards, when you put Swaha, you also add Samagri Swaha. So very simple procedure, and please understand and remember the meaning of Gayatri Mantra. It is very important when you chant Gayatri Mantra in Homa or otherwise. You must understand the meaning and then chant. When you understand the meaning and chant, then the prayer will really get realized. The prayer is, O Paramatma, Diyo Yonah Prachodayat. Please make my intellect pure, or make my intellect Gyanvan. See, when the intellect has the knowledge of the Vedas, or when the intellect understands what is right, what is wrong, what is Jnana and what is Ajnan, Jivatma also will understand from the Buddhi. Because Jivatma always faces the Buddhi. Whatever Chitta Vritti is there in the intellect only, that goes to Jivatma, that is us. So it's very important prayer by Almighty God in Gayatri Mantra. So every day try to spend some time. I have made this video like, the Homa I have put only for 7 to 10 minutes only, but I request you to increase the timing because I have to do my regular Agnihotra. If you do not know the complete Vedic procedure, at least start with the Gayatri Mantra. This is a very easy procedure, very simple one. And the Stuti, Prarthana, Upasana mantra also, when you listen for 10 to 12 days, you will easily get it. It's a very easy mantras, and the meaning of these mantras are there in my channel. If you go to the playlist Homa, Havan, Yajna, there I have made the Stuti, Prarthana, Upasana mantra meaning part 1, part 2, part 3, part 4. 4 parts I have made in English and Tamil. Go through the videos. Very easy mantras, very deep meanings. I will also try to make a series of, the Havan daily Vedic Agnihotra mantra meanings. So these are very helpful for our sadhana, our upasana, our materialistic life, and also our spiritual life. I hope you can continue doing. So you try to increase to at least 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening. Timing, no restrictions. I try to do every day in the morning 6 o'clock or 5:45. But if you are getting up late or you are working late, you do not have time, it's okay. You can do at 7 o'clock or 8 o'clock in the morning, and even in the night when you come late from the office also, you can do at any point of time. But the best time is early in the morning 6 o'clock and in the evening 6 o'clock. That's the best time. Other times are also okay, because God is always omnipresent. We can worship God at any point of time. So please see this video and let me know if you have any doubts. Thank you so much. Namaste. Om. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव भद्रं तन्नयासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ
य आत्मदा फलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेना त्वदितान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्तृतीये धामन्नध्यरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अमृतो उपस्तृण्मसि स्वाहा। ॐ अमृता अपिदानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मैश्रीः श्रयतां स्वाहा। ॐ वाग्मी अश्वे अस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणो अस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुः अस्तु। ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रम् अस्तु। ॐ बाहोर्मे बलम् अस्तु। ॐ ऊरोर्मे ओजो अस्तु। ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनस्तन्वा मे सह सन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वायग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजे तामयं च अस्मिन्नत्सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय।